Good evening, everybody. My name is Gun Vadhva. I'm 18 years old and I'm currently a first year BCom honor student at Shriram College of Commerce, University of Delhi. I was one of the people in the batch जिन्होंने पहली बार CUET दिया था last year, so I know exactly how uncertain and confusing it can be. So I'm going to try my best to help you out as much as I can. To let you know of my CUET score, my score was a 795 out of 800, and the overall percentile was a 99.8 percentile with a 100 percentile in two subjects out of four. I was also my school topper in the commerce stream with a 99% in four subjects and a 92% in one subject. So starting off, this was my current introduction. ये जो अभी मैं आपको दिख रही हूँ, this was that. But I was never like this. I had never even scored a 90% in my life before 12th grade, and I am not kidding over here. I was the only one जिसकी picture एक grey coat में आई थी on my school topper list, and everyone else had a blue scholar coat because they had always been toppers. तो मैं कभी भी topper नहीं रही थी. I in fact almost gave up on studies because I was training professionally with a company in dancing and I was performing, rehearsing. मैं उनके shows में जाती थी, rehearsal करती थी, and I had no intention of getting so strong academically or uh, trying my hand at studies. So I was never like this. This was just in 12th grade, and this is what I want to share it with you. But मैंने ये आपको इसलिए बताया है just to let you know that if I can do it, then all of you can do it, and that this was not how I started. This I had to build myself into, and that is possible for everybody. So the topic that I'm going to touch today would be of two types: study related and not indirectly studies related and indirectly studies related. So first and foremost, the tip that I want to give you when it comes to your studies for CUET and boards both is to stick to your NCRT and the material that you've got from the central board, because that is the only uniform material. वो ही एक चीज है जो सबके पास same है. So the examiner has to set the paper from that and not from outside. If you have extra time in your preparation, read the NCRT again and again and again. MCQ, CUET is an MCQ exam, multiple choice question. तो उसमें आपको NCRT के words identify करके easily answer मिल जाएगा. But to identify the words, you have to read it as many times as you can. Business studies and psychology books, I might have read over 10 times for sure, with making notes, underlining. तो अपना time अगर extra है, जो कि होना चाहिए while you're revising, focus on NCRT. Don't run after having more books. Less books, but more focus as compared to more books and, scattered focus. So that. Secondly, which brings me to my second point, is multiple revisions and practice. For your theory subjects like maths and accounts, I did not have maths, so I can't really guide you in that. क्योंकि मैं 10th में maths में बहुत बुरी थी. I told you I was never a topper, so I did not take math. But those of you who have math and accounts, उसमें practice is the only key. तो try and practice as many questions as you can. अगर आपको टीचर्स ने स्कूल ने 10 क्वेश्चन दिए हैं तो आप 20 करके जाओ. And MCQs don't take time also, which is the best part about CUET revision, that you don't have to write a lot to practice. You just have to know the concepts right. And for the theory subjects also, read again and again and practice as many questions as you can. If you want to refer to books outside of NCRT, refer to question and answer books and not the reading material, because reading material NCRT would be sufficient as per what I know and the other people that I've discussed this with in my college. Third, time management and proper division to each subject. We take English lightly, and that really hurt me because मेरे 12th में 99 आए in all subjects and English में 92 आ गए, because of which my score went down. So try and not take any subject lightly. I will answer all of these questions after this. But yeah, you can please keep putting them down in the chat. I'll answer it all. Yeah, so time management and proper division is very important. Don't take any subject lightly. सबको equal time दो, सब equal weightage के हैं. And especially English, क्योंकि English में बहुत लोगों का रह जाता है, मेरा including. So that would be something that you can learn from my experience. Fourth, pay attention to your classes, your school classes, your coaching classes. It always helps. जब आप सुनते हो और फिर पढ़ते हो तो you already have a gist और easy हो जाता है याद करना, because आपने एक interaction करी हुई है उस topic के बारे में as compared to just reading blindly. So please pay attention in your classes as much as you can, at least the ones. कोई एक पकड़ लो. So I preferred my tuition class for accounts over my school class. So for accounts मैं उनकी सुनती थी, and school I would not pay a lot of attention to. But for the other subjects, I would pay attention to my school classes because I did not have tuition for those. These were the study related tips. These you can get
millions of them online on YouTube from your teachers, from your seniors. Everyone will give you these. And it all comes down to आपके लिए क्या वर्क करता है, आपके लिए जो वर्क करता है आप उसे पकड़िए और अच्छे से करिए. But what I would like to focus on more are things that are not directly related to your academics, but play as much as an important role as academics, if not more. So let me start with those. And these are the things that actually made me go from a below average or an average student to my school topper in 12th grade. And these I would really want you to hear me out because no one talks about these, but these are really important. Number one, your health and your routine. You know, when we are not paying attention to ourselves and only sitting in front of the books the entire day, we're trying to run a car without fuel. Is that possible? No, right? Can you just type on the chat or something? It's not possible. We don't do that. तो हम खुद से क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं? For our mind to function optimally, for us to retain things, for us to improve memory, we have to take care of ourselves. And this is really, really neglected. I've seen students around me chugging coffee पी के रात को जाग के forcing the content into themselves. This can only help them pass or maybe even top this time. But at the end, kahin na kahin, their health will answer them back and they will have to sacrifice on their careers or something if they don't take care of themselves. So please take care of yourselves. I was the night owl. मैं सबको बोलती थी कि मैं तो मतलब बिल्कुल ही नहीं दिन में पढ़ सकती. And I used to believe in that. So I have been there, but it does not work. Our minds and our bodies are meant to function in the morning, are meant to function during the day, and are meant to sleep at night properly. So please focus on your routine, on what you do throughout the day. Listen to TED Talks. थोड़ा सा time रह गया है. Filter out the information that you're getting. I'm not saying phone छोड़ दो, पर phone का usage थोड़ा सा better कर दो. See if you can, like this session that you're having, try and listen to more people who can help you get closer to your goals instead of gossiping and just kind of passing time. And I am a yoga person, तो मैं पहले बहुत डांस करती थी. I switched to yoga and it has been a life changer. So I would really recommend yoga. But अगर आपके लिए वो नहीं काम करता, so any physical exercise that you can do, please don't neglect it. It really helps. और ये आपको सिर्फ कॉलेज के अंदर नहीं घुसाएगा, ये आपको लाइफ में हेल्प करेगा. And it is so there's this really famous quote from John C. Maxwell. I don't know if you've heard it, but he says that you'll never change your life until you change something you do daily. The secret to your success is found in your daily routine. The way you use your 24 hours, and they should be balanced from the beginning. अब beginning of session तो जा चुका है, exams are almost here, पर अभी से बैलेंस बना के चलो. पढ़ाई भी करनी है, खुद का ध्यान भी रखना है, एंटरटेनमेंट भी करना है, प्रॉपर स्लीप भी लेनी है टिल द वेरी एंड. वरना क्या होता है, अभी हम मस्ती 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 ओवरडोज कर लेते हैं. एग्जाम के टाइम हम कोशिश करते हैं पढ़ाई 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 ओवरडोज कर ले. डज नॉट वर्क. हमें शुरू से अपना टाइम हर चीज को देना है. आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया. मैंने कभी बंद नहीं किया. मैंने अपना फोन भी मम्मी को नहीं दिया. सो आई टेल यू दिस वन थिंग. when you're studying, your mind has to be at its peak level of excellence and it has to focus on what you're doing. लोग होते हैं मम्मी को फोन दे देते हैं, इंस्टाग्राम बंद कर देते हैं, सब बंद कर देते हैं, पर माइंड तो वहीं रहता है ना. माइंड तो उसी अलमारी में रहता है जहाँ फोन छुपा हुआ है. What's the point? Instead, you use your phone for 5 minutes, then keep it down and train your brain कि अगर फोन साइड में पड़ा हुआ है, if you're filled in a room of distractions, even then your focus should be so strong to your goal and your dedication should be such कि जरूरत ही ना पड़े देखने की. And if that is not the case, then try and work on that. Find your purpose. ये मैं बताती हूँ. It is, you will be the happiest person on earth if you work really hard for something and you achieve it. And I can just say it right now. It is so worth it. You won't regret any bit of it. ये मम्मी का खुश होना, टीचर्स का प्राउड होना, स्कूल में फोटो लगना, ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं. इन कॉलेज में जाना, ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं. ये सब मैंने सोचा भी नहीं था. मेरे को SRCC पता भी नहीं था क्या होता है 1 year back. It just happened. My only focus was, एक तो मेरी ईगो भी बहुत हर्ट थी बिकॉज मैंने स्कूल में कभी भी मार्क्स नहीं लाई थी. सो एवरीवन वाज लाइक गुन कैन ओनली डांस, शी कांट स्टडी, शी इज नॉट गुड एट एकेडमिक्स. वो डांस करती ही इसलिए क्योंकि उससे पढ़ाई होती ही नहीं है. तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स रियली जस्ट गॉट टू मी. और मुझे बस उसे चेंज करने के लिए पढ़ना था. कॉलेज में एडमिशन हो गया, अवार्ड मिल गया, ऑल ऑफ दोस थिंग्स जस्ट हैपेंड ऑन देयर ओन. आई डिड नॉट हैव टू चेज इट and I was only focusing on the content that I had to finish. I knew मेरी एक बिजनेस स्टडीज की 2 बुक हैं, चलो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है. अगर मैंने इसे अच्छे से रगड़ डाला, देयर इज नो स्टॉपिंग.
एंड माई ओनली फोकस देन वॉज, मेरे पास जितने भी दिन बचे थे, आई डिवाइडेड द बुक इनटू द नंबर ऑफ डेज आई हैड एंड जस्ट डिड व्हाट आई हैड टू डू विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट कौन से कॉलेज में जाऊंगी, ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वो नहीं, कभी कभी नहीं सोचा। आई वॉज ब्लेस्ड इनफ कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे प्रेशर नहीं कर रहे थे। बट अगर आपके कर भी रहे हैं, टेक इट इन अ गुड मैनर एंड नो दैट यू डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ। अगर खुद के लिए करोगे तो खुशी भी ज्यादा मिलेगी, आसान भी हो जाएगा, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल ऑल्सो हैपन विच आर एक्सटर्नल। So yeah, थोड़ा philosophy हो गया। I personally, I have given up on coffee। मैं 2-3 साल से कॉफी नहीं पी। मैंने ऑल नाइटर्स नहीं पुल करे। मैं पार्टी एंड अल्कोहल में इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। अगर आप लेते भी हो, प्लीज ट्राई टू बैलेंस इट बिकॉज एवरीथिंग इम्पैक्ट्स यू। वॉट यूर फीडिंग इनसाइड will come out in your preparation and every endeavor of your life। तो अगर और पढ़ाई, करियर, एग्जाम, ये सब एक ही चीज से चलते हैं, योर ब्रेन। तो ब्रेन हेल्थ इज, इट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड इसे मेंटेन करके रखना है, अपनी सैनिटी को मेंटेन करके रखना है। आई नो सो मेनी पीपल जो इतना अच्छा प्रिपेयर करके आते हैं, एग्जाम वाले दिन नर्वस हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, दे फॉल सिक, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। तो उनकी मेहनत मुझे बुरा लगता है देख के, दैट दीज गाइज हैव वर्कड सो हार्ड, बट उसका एंड में क्या हुआ? बिकॉज दे वर नॉट बैलेंसिंग इट विथ थिंग्स दैट वुड हेल्प दिस सिचुएशन एंड दैट वुड प्रिवेंट दिस सिचुएशन फ्रॉम हैपनिंग। तो शुरू से इन सब चीजों का ध्यान रखो सो दैट जो भी पढ़ा है उसको बेस्ट तरह से यूटिलाइज कर पाओ, इंस्टेड ऑफ ज्यादा पढ़ के कुछ ना हो पाए। फोकस ऑन हाउ यू कैन, योर स्लीप, डाइट एंड एक्सरसाइज शुड बी spot on if you want to achieve something extraordinary ever at all। तो अगर आप जंक खाए जा रहे हो, आपको पता नहीं है दिन है रात है, बाहर क्या हो रहा है, आपने सांस ही नहीं ली बाहर, you've never been into the nature, you're not, your body clock is not right, आप पूरे टाइम बेड पे लेटे हुए हो, 12 घंटे आपके सामने बुक खुली हुई है, does not work for me at least। If it works for you then good, but it won't work for very long। So try and fix it as soon as you can। कॉलेज में जाके 10 और चीजें आ जाती हैं, तब और मुश्किल हो जाता है। Right now it's comparatively easier। So fix all of these basic principles of life। Once your life is sorted, all your ambitions are sorted। Next, be vigilant throughout the process। मेरा CUET स्कोर पहले 728 के आसपास आ रहा था, and then it got up to 795 and I made it go up to 795। How, you ask me? जब CUET का स्कोर आया था, there was an answer key and मतलब उसमें लिखा था आपने ये आंसर किया है and this should have been your answer and this is your result, and those were wrong। I'm telling you, this system is very new। बहुत एरर्स होंगे, टेक्निकल एरर्स होंगे, आप जाके एग्जाम देने बैठोगे, आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, आपका एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकता है। मेरा एग्जाम इलाहाबाद में था, आई हैड टू टेक अ फ्लाइट ओवर देयर बिकॉज कुछ इशू हो गया था लोकेशन का, तो मैं फ्लाइट लेके होटल में रह के एग्जाम दे रही थी। सो दैट्स अनदर स्टोरी, बट ये सब भी हो रहा है। सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी विजिलेंट एंड ट्रस्ट योर प्रोसेस। मुझे पता था मेरा आंसर सही है, तो मैंने कंप्लेंट फाइल करी। आई पेड 200 रुपीज पर क्वेश्चन फॉर 12 क्वेश्चन। I paid 2,400 rupees to get my answers corrected again because I knew कि मैंने अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग और अपने ऊपर इतना वो रखा था कि दिस कांट गो रॉन्ग। एंड आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने बस वो वाला स्टेप नहीं लिया एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ देयर स्टडीज दे कुड नॉट गेट इन टू द कॉलेज दैट दे डिजर्व टू गेट इन। तो ऐसी छोटी छोटी एरर्स पे प्लीज ध्यान दो। जब आपका रिजल्ट आएगा उसे एक एक आंसर टैली करो, जहां पे भी आपको लगता है डिस्क्रिपेंसी है। बहुत लोगों ने मुझे कहा ये सिस्टम ऐसा है, तेरा कंप्लेंट कोई सुनेगा भी नहीं, तो क्यों पैसे वेस्ट कर रही है? I was like, I've come too far to avoid it now. And I just believed on a system that no one was believing in at that time। और मैंने वो दिए पैसे, मैंने वेट किया पेशेंटली, मेरे पास कोई बैकअप भी नहीं था, सब लोग जा चुके थे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। मेरे को भी हो रहा था कि शिट, व्हाट इफ आई डोंट गेट इनटू एनी कॉलेज। और 728 पे मुझे नॉर्थ कैंपस तो बिल्कुल नहीं मिलता, बट देन अगेन आई फाइल्ड अ कंप्लेंट एंड इट वर्कड and my score went up and now I'm into SRCC। So be vigilant throughout the process and trust yourself and trust the system even though it's not very trustworthy, क्योंकि बहुत नया है, उनकी भी गलती नहीं है, too many students to handle। but अपनी तरफ से please be vigilant and please keep calm। again that would come from your preparation, your core values in life and your routine। अगर आपका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म फिक्स होगा तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे। आप 2 चैप्टर्स पढ़ के फिर अगर 2 चैप्टर्स ढंग से कर लो, दैट would also matter more than you do everything and not remember anything। तो अपने इन सब चीजों पे प्लीज फोकस करो। Also just a last few pointers, please try to go the extra mile। जितना करने की जरूरत हमें लगती है उससे ज्यादा करो। बहुत दुनिया है, सब जो कर रहे हैं वो नहीं करना। If you want to achieve something extraordinary, you have to do something extraordinary।
एंड आई डिड द मोस्ट. मैं तो पागल ही हो गई थी. मतलब मैंने कहा कि इस साल माई लाइफ का ओनली गोल इज टू डू माई बेस्ट एंड स्कोर समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया था. तो आई वुड लिटरली, मैं एग्जाम के एक हफ्ता पहले अपना पेंसिल पाउच भी रेडी करके, एडमिट कार्ड लैमिनेट करके आराम से रखती थी. आई वुड मेडिटेट बिफोर द एग्जाम. आई वुड रीच द सेंटर 30 to 45 minutes बिफोर, क्योंकि मुझे एंड टाइम पे कोई पैनिक नहीं चाहिए था. बिकॉज दीज लिटिल थिंग्स कैन रियली अफेक्ट योर इंटायर ईयर एंड ऑल योर प्रिपरेशन एंड मे बी इवन योर करियर. तो प्लीज इन सब चीजों पे भी ध्यान रखो. रीच अर्ली. थिंक ऑफ द गोल ऑल द टाइम. अपने दिमाग में मैक्सिमम जगह दे दो उस गोल को जो अचीव करना है. और क्यों नहीं, आई मीन व्हाई नॉट. इट विल बी वर्थ इट फॉर श्योर. ये किसी भी ज्यादा क्लास से इंपॉर्टेंट होते हैं 12th के मार्क्स, बिकॉज दे गेट यू इनटू अ प्लेस दैट कैन मेक और ब्रेक यू, एंड इट गेट्स यू इनटू अ नाइस एसोसिएशन. एसआरसीसी में मेरे आसपास इतने इतने आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आउटस्टैंडिंग लोग हैं हु आर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर एक्सलेंस. तो अगर मैं चाहूँ भी तो भी मैं वहाँ लेजी नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन. So it really matters the kind of people you are with, and that would be determined by your college. So don't obsess over the result, but please keep it in your mind because it will actually be worth it, and it will decide the next 3 years and maybe even your career in life. So yeah, I would, मेरा डाइट वैसे मैं जंक वंक सब खाती थी इन बैलेंस इन मॉडरेशन, बट ड्यूरिंग माई एग्जाम टाइम आई मेड श्योर कि मेरे को एंड टाइम पे कोई कोई इशू नहीं चाहिए. माई माई डिनर बिफोर द नाइट बिफोर एग्जाम वाज 100% फिक्स. मैं मम्मा को बोलती थी एग्जाम डिनर एंड दैट वुड बी प्रिपेयर्ड, व्हिच वाज द मोस्ट प्लेन दाल, द मोस्ट प्लेन रोटी, द मोस्ट प्लेन फुल सैलड एंड सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन, पनीर और समथिंग, व्हिच आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं कुछ भी और नहीं खाऊंगी अपार्ट फ्रॉम दिस, no matter how much I'm craving something, because again, it matters to me, and it can matter to you guys also if you are striving to fix every single thing that can go wrong. Don't let anything go wrong at the end time, and just be grateful and realize this privilege. हम एजुकेशन को बहुत जब भी सोचते हैं इस मामले में लेते हैं कि वो टीचर्स डांट रही हैं, वो रट्टा मारना है, वो दिस एंड दैट, बट व्हाई डोंट वी टेक इट एज अ लर्निंग. मतलब business studies, you're getting to learn about businesses, how they function, how the most biggest companies in this world are functioning. Try to put that mental approach, mental revolution. Now subjects are of your choice. Any subject that you pick up, psychology is teaching you about your mind, how you function, how the world functions. If you actually develop an intuitive interest for the subject, nothing would matter. बस अपना सब्जेक्ट पे फोकस करो, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है वो. जस्ट लाइक यू रीड अ नॉवल और अ बुक फॉर योर सेल्फ विदाउट एनी एग्जाम, ऐसे ही इसे भी रीड करो विद फुल इंटरेस्ट, विद ट्राइंग टू गेट एवरी सिंगल थिंग आउट ऑफ योर सिलेबस, एंड देन एग्जाम्स विल जस्ट, वो भी एक बाय प्रोडक्ट बन जाएगा कि दे दिया चलो, बट यू डिड दिस फॉर योर सेल्फ एंड टू लर्न मोर. देन बी ग्रेटफुल, प्लीज बी ग्रेटफुल. बहुत लोगों को एजुकेशन भी नहीं मिलती है. हम ये तो देखते रहते हैं कि कितना कंपटीशन है, बट हम ये तो देखते ही नहीं कि कितने लोग इस रेस में ही नहीं आ पाते. दे आर नॉट ब्लेस्ड इनफ टू बी टू अफोर्ड दिस बुक एंड टू गिव दैट एग्जाम. हम बहुत लाइटली लेते हैं अपनी चीजों को, बट हमारे घर पे कैसे सब बोलते हैं कि ओ उनका एग्जाम है, प्लीज चुप रहो, गेस्ट नहीं आएंगे, ये वो. सो यू सी हाउ एवरीथिंग अराउंड यू is kind of supporting your goal. The day that your heart starts to support it as well, there is nothing that could go wrong, and you will get in where you are meant to get in. Yeah, and for the subject thing, sir was telling me that you guys have some confusion. तो अपने कोर्स, जो भी कोर्स और कॉलेज करना है, उसमें सब्जेक्ट जो लिखे हैं उसमें तो अपियर करना ही करना पड़ेगा, एंड उसमें ट्राई एंड डू योर 100%. प्लीज डोंट रन आफ्टर टू मेनी बैकअप्स कि मैं ये भी वाला सब्जेक्ट दे दूं जस्ट इन केस. मैं ये भी, एक दो ठीक है, बट डोंट थिंक टू मच ऑफ द बैकअप, फिर आप बैकअप में बैठ जाओगे. नो, व्हाई कांट यू अचीव योर फर्स्ट प्रेफरेंस? आई डोंट गेट इट. फर्स्ट प्रेफरेंस पे अपनी नजर रखो एंड जस्ट बैक ऑफ द माइंड ट्राई टू प्लान इट, बट डोंट सेटल फॉर लेस एंड डोंट डू टू मच. क्योंकि अगर आप 6 सब्जेक्ट दे रहे हो, मैटर 4 ही करेंगे, तो आप 6 जगह अपनी एनर्जी डिवाइड कर रहे हो. एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट? तो अगर आप 4 में भी बहुत ढंग से फोकस कर लोगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. सो डोंट रन आफ्टर. आई नो द, आई थिंक द लास्ट ईयर लिमिट वाज 11 सब्जेक्ट्स, बट 11 सब्जेक्ट्स किसी ने नहीं दिए, एंड मतलब आई डोंट नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड इज ऑल आई वुड से. लेस इज मोर. Focus on the quality of your work. Don't dilute your focus into too many areas, too many courses, too many colleges. I knew students around me जो Xavier's का entrance भी दे रहे हैं, Christ का भी दे रहे हैं, NMIMS का भी दे रहे हैं, DU का भी दे रहे हैं, बट ऐसा कुछ खास हुआ नहीं. सो मत डरो इन सब चीजों से. बैकअप इज वन थिंग, बट गेटिंग ऑब्सेस्ड ओवर योर बैकअप्स इज अनदर.
बस इस पे फोकस करना. एंड नाउ आई थिंक आई कैन टेक अ फ्यू क्वेश्चंस दैट आई हैव. Is reading newspaper important? If you're asking for the general test, then yes, मैंने general में again I did not appear. मेरा कोई backup नहीं था. मुझे BCom honors और BA psychology करना था. उन दोनों के लिए I needed only 4 subjects and I appeared only in 4 subjects. But yes, reading newspaper is important because उसमें current affairs आता है and और भी उसमें जो quantitative, logical thinking है वो सब है. Practice those from reputed sources. My daily schedule was my daily schedule was I would wake up as early as I can. जिस दिन मेरी yoga class होती थी 7:30 something, I would do my yoga class. I would have a proper healthy breakfast, get all ready, dressed up. Even though online classes होती थी, I would dress up for it and switch on my camera because मैं पागल हो गई थी. I already told you. So then I would attend those classes. Then I would do my own revision. जिस दिन क्लास नहीं होती थी, I would sit and study on my own. I had daily targets कि मेरे को इतने chapters करने हैं. अब चाहे वो 2 घंटे में हो, चाहे वो 6 घंटे में हो, I don't know. So वो मैं बस करके ही रहती थी. And I divided the chapters as per the days that I had for my preparation. And then I did a lot of revision, but not with a lot of books. From the same old books, I did a lot of revision. So, my most warm wishes for all of you. I hope you guys get into wherever you wish to. And commerce students, I hope I see you on campus really soon. Everything will go well. Just focus on the basics. It's not very complicated. And give your best. Uh, I think there's just one last question that I don't want to miss out on. Are there any other forms I need to fill except CUET? Yes, you need to fill out. You need to make an account on the university page that you want to go for. तो Delhi University का एक CAS portal है. उसमें एक account बनाना होता है. And after giving your CUET exam, everything related to the admission process in Delhi University takes place in the Delhi University website and not the CUET website.